Kejriwal is now out of Tihar jail. Sneha has been telling us about that. We've got the confirmation right now that Kejriwal, out on bail, has now been released from Tihar jail to a massive welcome from AAP workers. You can hear the cheering, you can hear all of them waving and clapping along as Arvind Kejriwal, their leader, after 3 months is back out on bail. They're celebrating, and those are the first images on your screens. Kejriwal atop a vehicle in his blue shirt there, waving to the crowds that are present. Rain not dampening their spirit, rain not stopping Arvind Kejriwal from sitting atop that vehicle and waving at all the AAP workers, thanking them for gathering there in such large numbers. Sneha, if you're still with us, take us through the images that you're seeing. Okay, we'll go to Sneha in just a bit and get you a sense of what's happening on ground. But our reporters are there currently getting you the latest updates as Arvind Kejriwal has exited from Tihar jail. There you have got those first images of him trying to also speak to the AAP workers, thanking them for their support. Let's cut across live. अरे यहीं आएंगे भाई, यहीं आएंगे। स्पीच चल रही है, स्पीच चल रही है। आज मैं आप लोगों के बीच में लाखों करोड़ों लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूँ। लाखों लोगों ने मन्नत मांगी, लाखों लोगों ने दुआएं की, आशीर्वाद भेजे, प्रार्थना की, मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारे गए। उन सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इतनी बारिश में, इतनी बड़ी संख्या में आए, दोस्तों, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। मेरे जिंदगी का एक एक पल, मेरे शरीर का एक एक कतरा, मेरे खून का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया, क्यों? बहुत बड़े संघर्ष किए, जिंदगी में बहुत मुसीबतें झेली है, लेकिन हर कदम पे भगवान ने मेरा साथ दिया। ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया, क्यों? क्योंकि मैं सच्चा था, मैं सही था, इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया। इन लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया। इन लोगों को लगा कि केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं जेल से बाहर आया हूं, मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। मेरी ताकत 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है। इनकी जेल की मोटी मोटी दीवारें, इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, जैसे आज तक ऊपर वाले ने मेरे को रास्ता दिखाया, ऊपर वाले ने मेरे को ताकत दी, ऐसे ही भगवान मुझे रास्ता दिखाता रहे, मैं देश की सेवा करता रहूं और ये जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो देश के विकास को रोक रही हैं,
जो देश को बांटने का काम कर रही हैं, जो देश को अंदर से कमजोर करने का काम कर रही हैं, जिंदगी भर में इनके खिलाफ लड़ा हूं, आगे भी ऐसे ही लड़ता रहूंगा। भारत माता की, भारत माता की। Kejriwal there in his first message to AAP workers after stepping out of Tihar jail, saying that my resolve now has become 100 times stronger than it was before I walked into Tihar jail. He said that they've put me behind bars to think they could break me, but you can never break me. You've only strengthened my resolve further to work for the nation. Arvind Kejriwal also saying that it's the prayers of every single one of his supporters that ensured his release today. And he's also, in fact, said very clearly that God has ensured his release because God knows that he is true, he is honest. Let's get your reactions now from our leaders. सबसे बड़ा अरविंद केजरीवाल जी को फौरन रिहा करने का आदेश दिया है। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट की गहराइयों से सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं। A roadshow of sorts there at Tihar jail as Arvind Kejriwal is waving to the crowds and moving past their entire stretch. After this, he's going to be headed to his residence where again there's going to be a grand show of support, of strength, of solidarity by AAP workers. The heavy rain hasn't stopped Arvind Kejriwal. He's atop his vehicle, chanting slogans with AAP workers, accepting their love, accepting gifts that they've brought for him as well. He knows full well the importance of these images, especially in the run-up to the Haryana elections. This by itself is a campaign for the Aam Aadmi Party. And remember that while Arvind Kejriwal, as per the Supreme Court conditions, can't sign official files, can't go ahead and visit his office, he can campaign in Haryana. So that's a big shot in the arm for the Aam Aadmi Party. And that's why even now, as he stepped out of jail, immediately went atop his vehicle, the weather not being a problem or an excuse, spoke to the crowds there, told all of them that my resolve is that much stronger and I will continue to fight it out. We will get you a reporter as, in fact, Kejriwal moves now to his residence. Amit Bharadwaj is at Kejriwal's residence, where again the crowds are swelling up. Amit, we've had Kejriwal now out of Tihar jail, a roadshow of sorts. He's travelling atop the vehicle, taking in, soaking in all the love from AAP supporters. A repeat of that expected where you are, where already I can hear the dole and I can see people dancing behind you in celebration. Yes, Akshata, let's cut across to these visuals for our viewers, the celebration visuals, the visuals of a sense of victory that Aam Aadmi Party workers have, despite the fact that it's raining out here at civil lines. आप लोग जिस तस्वीर के इंतजार में थे वो तिहाड़ जेल से आ चुकी है। अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं, कह रहे हैं कि जेल से निकल के मैं 100 गुना और ताकतवर हो गया हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, क्योंकि वो दिल्ली के लाल नहीं देश के लाल हैं और आने वाले देश के प्रधानमंत्री हैं वो, और प्रधानमंत्री की जो तानाशाही शासन है उसको वही खत्म करेंगे। और वो समय दूर नहीं है कि भारत के अंदर जब केजरीवाल का शासन होगा और पूरी जनता खुश होगी।